ये हाइलाइट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान की टीम मद्दे मुकाबिल है केपी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। और पहली खबर ये है कि टॉस जीता है बलूचिस्तान के कप्तान हारिस सुहेल ने और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। So yeah, there are big numbers. I'm not really sure about exact numbers during the PSL games over here in Multan, but they were also high-scoring games. I suppose 170 was the average. I'm just being told. So yeah, this is batting paradise. KP is on paper a very strong side. Lots of experienced players in batsmen and in bowlers. And Hafiz starting off. And straight away change in tactics. Hafiz did not bowl in the first game that KP did play. Almost always gets that upper hand against the left-handers. There you go again. I think that was extremely close. Don't have 2020 vision, but that, well, we were talking about the key. The key is that he attacks the stump and is so very accurate. The ball keeps coming back into the left-hander. Although he's an off-spinner, slightly short and dealt with. Boundary at the end of the over. I thought he was unlucky. He should have had a wicket. He's really far away from it. But we've seen Imam do that. He likes to give charge. Wow. That's another example of this outfield here. That gets a 4, very straight down to third man. That's also the end of the over. So it's 11 for none after 2. In fact, 15 for none after 2. Oh, it was upish, but beats the fielder at mid-wicket. Chase is on, but the ball wins the race. That's the boundary here. Again, a bit of a slog. He thought he was in with a chance. He thought that this should have been taken. Well, might have a case there. No ball. And a boundary. Well played by Owais along the carpet. Just beats that extra cover. But a no ball. Ominous signs straight away for Shinwari. Just slightly over. A beautiful shot by Owais there in between all this discussion about Shinwari. Like a baseball player. Nicely done. Beautiful. Yeah, terrific shot. I hear what you're saying. Even if you play conventionally or play proper cricket shots, or just stay with the shot. The outside edge races away to the fence. A little bit of shape from Shaheen goes to the fence. But more importantly... That's not important, yeah, please. More importantly, the problem is that you need a restaurant which opens till 1 a.m. If anybody has got any idea, you can find Mazhar Arshad, who's the leader of the group. If you've been on social media, you know where he is. Just tag him and tell him which restaurants to go, because this rebel group... You'll still be at the same level. Up in the air. Oh, that's a very, very good catch. Has he got it cleanly? Yes, he has. He dived towards his right. He had to cover some ground, and in all this chaos, we've found a wicket, and Shaheen strikes for KPK. Their short ball working. He's got the ball to shape, but the change-up was the short ball. Cramped Imam for room, and there was no way that he was going to free his arm. Wahab does magnificently, diving and picking up superb catch. Oh, right through him. Nothing you could do about it. That's Shaheen for you. And that's the end of Ovaisia as well. Here we go. KP right on the ball. That's why they're such a dangerous team, because they have bowlers like Shaheen Shah Afridi. He can produce gems like that. Just straightening slightly, hits the off stump, gets another wicket. और 4 रन्स। बिस्मिल्लाह खान जो है पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनके कप्तान हारिस और नायब कप्तान बिस्मिल्लाह इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। और ये बहुत ज़्यादा ख़राब गेंद थी, इसे फाइन लेग बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया।
तो यहाँ पे अब आइडियल मौका है, अगर एक और हो जाती है अपील और आउट दे दिया। बिस्मिल्लाह खान फिर स्वीप करने चले गए थे। पिछले ओवर में उनके खिलाफ अपील अंपायर ने मुस्तरद की और इस बार भी स्टंप्स के बिल्कुल सामने थे और गेंद रोल के वाज़े तौर पर नीचे लगी। That's in the air, but that should clear the field easily. So now shifting gears here, Aris Sohail. A boundary and a 6, just attacking the bowler a bit. It's a good ploy. Been quiet for a while now. That's the first 6 of the day, of day 3 of the National T20. So yeah, things have not really been that flourishing or fireworks. This is the first one. And we'll probably see more of them. Well, Sikandar, that's the old school Sialkoti 1-2 punch. He's picked that. That will clear the fielder down at long on by a mile. So he just rocks back slightly and gets underneath the ball and gets maximum here. This over 2, now getting a slightly expensive a boundary and a 6 here. 100 up for Balochistan. He bowled that ball in the slot. He was ready for it. You're not supposed to bowl that length ball, especially at this time in Multan. Fuller, slower, and earns him a wicket here. Trying to make room, Haris Sohail, and suddenly realized that he's way too far away from the ball. Managed to get some bat onto it, but no control of shot. And that is a good wicket. So you'll just forget about the 6 and the boundaries that were hit. You get a wicket and you get a big one, and you get the praise. Good start by Mercer, let's go. And that looks like a big hit. And that is a boundary. A full, nice and juicy full toss. Imran Butt is about to get going. All this pressure on Mohsin right now by bowling a loose ball first off. Yeah, you'd get pulled up by your dugout if you don't hit those. That was a freebie. He's launched himself into that one. That should be a maximum again. 10 more trees from PCB and Tuck. Now we are seeing those big hits coming. शनवारी के स्पेल का आखिरी बॉल 48 रन्स दे चुके हैं, एक्सपेंसिव फिर से। इमरान फरत ने ट्राई किया लेकिन इस दफा नाकाम। शनवारी विकेट ले ली इन्होंने अपनी लास्ट बॉल पे। इमरान फरत एक और चौका मारना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, टाइमिंग नहीं हुई और शाहीन शाह अफरीदी ने कैच पकड़ा। थोड़ा सा रिलीफ केपी के लिए। फाइनली शनवारी ने विकेट हासिल करके कहीं ना कहीं पिछली 2 बाउंड्रीज का एक तरह से गुनाह साफ कर लिया। एक काफ़ी आज वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम लग रही है। और सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ और एक और विकेट। तो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है केपी के लिए। इफ्तिखार ने कैच पकड़ा, शाहीन शाह की एक और विकेट। बेहतरीन बॉल थी, फुल लेंथ थी, विद इन विकेट्स थी, अंडरनीथ नहीं जा सके, सिर्फ एक चिप कर दिया और इजी कैच इफ्तिखार के पास। और यासिर शाह भी पवेलियन की तरफ वापस। शाहीन शाह अगेन फुल बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है उनको कि सामने हिट लगाई जाए। सेम वे ऑफ गेटिंग आउट। यासिर शाह भी चिप करना चाह रहे थे, मिड ऑफ सर्कल में था, लेकिन अगेन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट वहाब रियाज को भी विकेट मिली, लेकिन उमैद आसिफ का खूबसूरत शॉट राउंड द विकेट से। वहाब अमूमन यॉर्कर करते हैं, थोड़ा सा मिस हुआ यॉर्कर, और उमैद आसिफ काफ़ी केपेबल हैं सामने बाउंड्रीज मारने के। और एक और विकेट, पॉइंट पे बड़ा जबरदस्त कैच। बात वही होती है जब सामने डाइव करनी हो। स्लोअर वन, बल्ले का बाहरी किनारा और खूबसूरत कैच। इस दफा डीप स्क्वायर लेग की तरफ और
बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई। सूरज को ब्लेम कर रहे हैं, बॉल उनको नजर नहीं आया, लेट रिएक्शन। ये हमने कल भी देखा था ऐसा एक मौका। ग्लासेस भी नहीं पहनी हुई तो वहाब रियाज को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। ऐसे हुआ कि सूरज था, उन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी हुई थी, उनको बॉल नहीं नजर आया और बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई। 148 पे 8 और चांस है 5वीं विकेट का और 5 तो हो गई। फखर जमान ने कैच पकड़ा, शाहीन शाह अफरीदी की 5वीं विकेट। वापस जा रहे हैं स्टार्ट पे, उनको पता है कि छठी भी लेनी है। जिस तरह T20 के लिए इन्होंने अपनी बॉलिंग को इवॉल्व किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। निशाना तो बांधा लेकिन कामयाब बैट्समैन हुए। उसामा मीर की बहुत ही जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव। और शॉर्ट बॉल, शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 5 ही आउट कर सके, 6 आउट ना कर सके, लेकिन 5 for 20। मतलब ये हुआ कि बलोचिस्तान सिर्फ 152 रन बना सके अपने 20 ओवरों में। Fakhr likes pace on the ball rather than pace off. So we're ready. Akif. And there you go straight away. Pace on the ball, width and a boundary to start off the innings. Fakhr Zaman, the front foot killer, always stays on that front foot. Anything you're gonna get him wide of the crease, wide length, he's gonna throw both his hands at it. What a beautiful start for him. We know that he gets his runs quick. He plays fearless cricket, and this is exactly the start that KP wanted. Akif is a little bit inexperienced, but is an upcoming extreme. Exactly the start that Fakhr wanted, exactly the deliveries that he wanted outside the off stump, freeing his arms, back-to-back boundaries. Until and unless he gets tighter, it's going to be the same result over and over again. 3 in a row. And starts off with a delivery down the leg side, and Rizwan likewise. Not an ideal start for Balochistan, exactly how KP wanted to get started. And all Fakhr has to do is continue on. And continue on, he does. Another boundary short and dismissed from his presence. Fakhr Zaman hits this through the onside. Another boundary. It's been raining fours in this, well, 2.3 overs. It's Fakhr Zaman's 5th boundary. Fakhr Zaman feeling bold and beautiful. He's just getting balls under bat and it's going straight into the fielders. Are just watching it going to the boundary. Being over here, and I understand any one run, if it's crossing the fielders. Beautifully timed through the offside. Time and time again, it's like a broken record. We've said that the outfield's lightning quick, but just the timing on that, he's placed it through the gap, and once he does that, there's only one result. Look how beautifully he timed that ball. He knew that Yasir Shah is bowling right in the middle, so he gave himself some room. Go on, Imad Bhatt. Gets that desired result. Fakhr Zaman flashing outside the off stump. Extra bounce does for him. That ball kicked, and that's the miracle I was talking about. Imad Bhatt with the breakthrough of Fakhr Zaman. Beautiful catch by Bismillah. Maybe this is the time where the team can unite, talk about how they want to go about the next 2-3 overs. और इस बार हफीज ने ऑफ साइड की फील्ड का मज़ाक उड़ा दिया।
खूबसूरती के साथ खेला, कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस वाइड गेंद को, जिस पर उनको हाथ खोलने का भी मौका मिला। जहाँ कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच पर पहुंचे और बड़ा जोरदार शॉट लगाया। बड़ी करारी आवाज आई इनके बल्ले से, इजीली सर्कल को क्लियर किया, बल्कि इनफैक्ट एक ही बाउंस बाद गेंद जो है वो 4 रन्स के लिए पहुंच गई। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दाएं हाथ के बैट्समैन को आउट स्विंग करते हैं, लेकिन इस मरतबा शानदार शॉट, निहायत आला फुटवर्क और गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री के उस पार। बल्कि मॉडर्न डे क्रिकेट में पहली गेंद पर बैट्समैन चौका लगाना पसंद करते हैं। रिजवान जो हैं उन्होंने ये छक्का लगाकर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की अपनी टीम की। इस बार गेंद को अपने सीधा बल्ले के नीचे लाने में कामयाब हो गए हफीज। बड़ा एफर्टलेस शॉट लगता है उनका, अपनी जगह खड़े खड़े जोरदार शॉट लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स हैं इनके, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्ट हैं हफीज की, अगर आपने कभी हाथ मिलाया हो इनसे। जी, और आजकल ये गोल्फ भी तवातुर से खेलते हैं, और ये बैट स्विंग है, ये जो गोल्फ की स्टिक होती है उसी तरह की स्विंग से ये शॉट खेल रहे हैं। इंग्लैंड में भी नज़र आया था, मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में भी गोल्फ खेल रहे थे। और एक बार फिर जोरदार शॉट खेला हफीज ने, एक और छक्का, जारहाना बैटिंग का मुजाहरा। बड़ी अच्छी T20 फॉर्म में है मोहम्मद हफीज। बड़ा तेज गेंद कर रहे हैं यहाँ पे यासिर, और ये टू द लाइकिंग ऑफ हफीज जो है। इस बार उठाया फील्डर हैं और ना ही चौका बचा सके, और कैच वैसे ही उनकी पहुंच से बाहर था उमैद आसिफ की। 4 रन्स मिल गए। उसामा बिल्कुल भी खुश नहीं। Easily cruising towards the victory. Shot and dismissed. Hafiz did not like that. It was almost like an insult. So 10 more trees to be planted. PCB and TUC will be planting those trees. They'll really get busy. And if Hafiz plays shots like that, there's no place that you can hide. Short one, and finally Hafiz departs. A big wicket, but that's skidded off the surface. Hafiz beaten for pace, but a fantastic innings nonetheless from Hafiz. Out for 45, Akif with a quick bouncer. Akif strikes. Yeah, just got tall on him. If he wasn't in control of that shot. And a bit relief for Balochistan. He was looking in sublime form. Couldn't just capitalize on the start, but a brilliant innings. 45 off just 25 balls. Mohammad Hafiz has to walk back. As individual, where teams stand out and where captaincy stands out. Shot and smashed. You don't bowl there. Sikar just stood tall and he's crashed it to deep mid wicket. Goes short again and has to fetch that too. Back-to-back boundaries to end the 13th. It's 123 for 2. इनके जो प्लान था उसके हिसाब से इन्होंने तो इसे रन कम किए थे, लेकिन बहुत बड़ी हिट मारी है। 50 for रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बहुत बड़ी हिट मारी रिजवान ने अभी। आउटस्टैंडिंग 6 दिखा रहे हैं कि अपनी क्लास अपने लास्ट सीजन में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और अभी इन्होंने टाइम लेके एक आउटस्टैंडिंग 50 की है केपी को लीड करके। यासिर शाह भी अभी इस बॉल उतारे। और ये अगेंस्ट द टर्न उन्होंने हिट लगाई, जो कि आसान नहीं होता बैट्समैन के लिए। लेग स्पिनर को लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगा दिया, निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। और ये जोरदार छक्का लगाया इफ्तिखार अहमद ने, और गेंद हवा से बातें करती हुई आई मैदान के बाहर, और इस तरह ये मुकाबला जीत लिया है खैबर पख्तूनख्वा ने। आज 8 विकेटों के बहुत बड़े मार्जिन से। कल इनकी बॉलिंग नाकाम हुई थी और बैट्समैन मुश्किल में नजर आए थे 243 के हदफ के ताकुब में। ये इस मैच का खुलासा है। बलूचिस्तान ने आज 152 रन बनाए, और
इमरान भट्ट टॉप स्कोरर थे 37 रन के साथ, और जवाब में खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने ये हदफ आसानी के साथ हासिल कर लिया और 8 विकेटों से उन्होंने ये मुकाबला जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल किए। जोश है